Hello student, welcome once again in lecture number 9 for B.Sc. second year student, group 3 7th paper and semester is third semester. In previous lecture we discussed about types of function. First function is a into function, second is onto function, third is one-one function. So in last lecture, in previous lecture, we have discussed what is meant by one-one function. So it is very clear. I hope you understand this. A be the set and B be the set. Any two non-empty sets having some element x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4. Each and every element in A has unique image in the B, and elements belongs to the range of B, element belongs to the range of B has only one pre-image in set E, and such a type of function is one-one function. देखिए, so B सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है वाईफाई, कोई बात नहीं, और जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना जरूरी है, उसे कहेंगे हम वन-वन फंक्शन. नाउ फोर्थ इज मेनी वन. मेनी वन फंक्शन. अब मेनी वन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, मुझे तो लगता है ये भी आपके ध्यान में आया होगा. मेनी वन. लेट एफ बी द एनी फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी. एफ बी द एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. आई टेक दिस इज अ सेट ए, दिस इज अ सेट बी. दिस x1, x2, x3, x4, and this is y1, y2, y3, y4, y5, y6. Many one, that means इधर के many एलिमेंट उधर एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है. इस टाइप का जो फंक्शन रहेगा उसे बोलेंगे many one फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल ये x1 एसोसिएट है y1 से, x2 एसोसिएट है लाइक दैट. ये x3 एसोसिएट है y4 से, x4 एसोसिएट है y4 से लाइक दैट. मतलब रेंज में जो एलिमेंट है, अब यहाँ पे रेंज में कितने एलिमेंट है देखिए. रेंज में एलिमेंट है y1 और y4. तो रेंज में जितने एलिमेंट आएंगे उनको एक से ज्यादा प्री इमेज होना जरूरी है. जैसे y1 हैज टू प्री इमेजेस x1, x2. y4 हैज टू प्री इमेजेस x3, x4. इन दिस वे. सो मेनी टू वन फ्रॉम द क्लास 9th, we know very interesting and very first class example, that is y is equal to 5. Y is equal to 5 means straight line. This is the equation of straight line, and y is equal to 5, passing through y is equal to 5 like that. So this is our x-axis and this is our y-axis. On the y-axis there are
so many numbers 0, -1, -2 and so on, 1, 2, 5 and so on. And this is a 0, -1, -2, this is a 1, 2 and 3, 4. So y is equal to 5 means you choose x is equal to any number, but we get its image is 5. -2 related to 5, -1, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, and we draw this line. Y is equal to 5, this is the 5. Whatever the x, we get the corresponding mapping is 5. X is 1, y is 5, this 0.15. X is 2, this 0.25. X is -1, this is -1.5. So this is a first class example of many one function. That means in this case, some elements left in the set B, some elements left, and those elements belongs to the range of the function, so having one or more than one pre-images. So this is nothing but many one function. I think you understand. Now next type is many one into. Many one into. देखिए अब इंटू फंक्शन तो है कि कोडोमेन में कुछ तो एलिमेंट होना जरूरी है जो किसी की इमेज नहीं है, और मेनी वन. अब ये एग्जांपल तो फर्स्ट क्लास होगा. मेनी वन भी और इनटू भी है. देखिए यही एग्जांपल इनटू है क्योंकि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे है कि जो किसी की इमेज नहीं है. y2 is not an image of any element belong to A. y3 is not an element of it is not an image of element belong to A. So this is into mapping and many one mapping, first class. Many one into mapping. I take this example from A to B. I have shown that x1, x2, x3, x4, and this is the y1, y2, y3, y4, y5. This is their representation. So x4 to this, x2 to this, x1 to this, x2 to this. Many one है, इसमें से दो दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है तो मेनी वन हो गया. ठीक है. और इनटू भी है क्योंकि इसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे है जो एसोसिएट है नहीं. सो दिस इज द मेनी वन इनटू फंक्शन. मेनी वन इनटू. नेक्स्ट टाइप इज वन वन इनटू. देखिए वन वन है, ऊपर से इनटू भी है. वन वन इंटू, ये एग्जांपल है वन वन इंटू का. x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, y5. अब ये x1 का इमेज समझो y1 है, x2 का y2, x3 y3, x4 y4. One element associate to only one element of the set B. One element of set A associate to one element of the set B. And B has, or in the B remains some elements, that is y5 is extra element which is not associated to any element of E. तो ये 1 1 हो गया
और इंटू भी हो गया क्योंकि इसका जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। रेंज में एलिमेंट आएंगे y1 y2 y3 y4 और y1 y2 y3 y4 इसका जो सेट रहेगा वो तो B का सबसेट हो जाएगा। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज द सबसेट्स ऑफ कोडोमेन, सो इट इज इनटू एंड एक एलिमेंट एक से एसोसिएट आए तो 1 1 और दोनों मिला के 1 1 इंटू। जैसे हमने इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, सेम इसी तरह नेक्स्ट रहेगा 1 1 ऑनटू। नेक्स्ट है 1 1 ऑनटू। अब 1 1 ऑनटू में क्या आएगा, तो 1 1 ऑनटू आई थिंक आप लोग इसका डेफिनेशन बना सकेंगे, इसका पिक्टोरियल डायग्राम भी निकाल सकेंगे आई थिंक। सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू ड्रॉ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 1 ऑनटू फंक्शन। ट्राई टू डिस्कस सम प्रॉब्लम, draw pictorial representation, take some particular example. Okay, consider it as homework. So this is the point x1, this is the point x2, this is point x3, this is point x4, this is point y1, this is point y2, this is point y3, this is point y4. x1 associate to y1, this associate to y2, this associate to y3, this associate to this. अब ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है, मैंने तो सीधा x1 x2 x1 y1 से x2 y2 से एसोसिएट किया। नीड नॉट बी नेसेसरी, हो सकता है कि x1 रिलेटेड टू y3, x2 रिलेटेड टू दिस ओके। तो ये जो सेट A है और ये जो सेट B है और ये दोनों में का मैपिंग है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इधर का एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है और ऑनटू है। ऑनटू मतलब देयर इज अ नो एलिमेंट, एक्स्ट्रा एलिमेंट इन B। सो एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट B possess pre-images in set A and every element of the set A possess image in the set B. तो A में जितने एलिमेंट रहेंगे उतने ही एलिमेंट B सेट में होना जरूरी है, तो उसे हम कहेंगे 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 है, ऑन टू है, तो उसे बोलेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन, हर एक एलिमेंट से एसोसिएट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B और रेंज ऑफ B एंड कोडोमेन। देखिए सम पॉइंट, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स in B. Second, range of function is equal to codomain of function. कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन दोनों सेम ही रहेंगे। तो इस तरह ये हो गया 1 1 ऑनटू फंक्शन। तो इस तरह से अगर आप इनटू और ऑनटू फंक्शन का डेफिनेशन अंडरस्टैंड in detail or very well, then you can understand the meaning of many one on two, many one into, many one into, many one on two, and so on. Okay, so these are the very important
these are very important functions, but remember one thing, in all these functions, this function is very important. So please try to understand all these types of function, refer books, read books, and discuss some problems. And if you have any difficulty, then you can ask me, you can comment on that difficulty. I can make video in future. Okay, so dear student, in next lecture we discuss some other points. Okay, thank you very much.